Papers to be laid on the table, Sri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleagues, General V.K. Singh ji, Sri Nityananda Rai ji, Sri A. Narayana Swami ji, Sri Kaushal Kishore ji, Sri Ajay Kumar ji, Please. and Sri Pratima Bhaumik ji. This is not going on record. I lay on the table of the House the papers listed against their names from serial numbers 1 to 6 in today's revised list of business. Message from Lok Sabha. Let me complete. Message from Lok Sabha. Let me complete. What is the point of order? The rules clearly say that the papers will be laid by the concerned minister only when a specific permission is taken that another colleague or the Minister for Parliamentary Affairs shall lay the papers. Now the ministers are present. This thing, House, whatever it is, those ministers who are present here, right, they should not be given this luxury of not presenting the paper. This is disrespecting the House. Please, Venugopal, please, this is not the way. You have to advise your members. See, you can go through the minutes. The chair has allowed the Parliamentary Affairs Minister to lay the papers mentioned against the names of other ministers because of the COVID situation. That has been announced. What is happening to you all? You are not supposed to comment on this. Your leader has brought it to a notice. Leave it there. Don't stretch it too much. It has been already mentioned in the bulletin also. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 3rd of August 2021 passed 1. The Essential Defence Services Bill 2021 and 2. The Tribunal Reforms Bill 2021. I lay a copy each of the said bills on the table. Reports of the Department Head Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Sri T.G. Venkatesh. Respected Chairman, sir. Today, our panel reports, sir. I rise to present the following reports, both in Hindi and English. Please. Of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. 299th report on the action taken by the government on the recommendation contained in its 289 report on demand for grants of the Ministry of Culture. 300 report on promotion of infrastructure in India's maritime sector. Thank you, sir. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, Sri Vijaypal Singh Tomar. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में विभाग संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभापति पर रखी। Statement of the Department Head Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Sri Swapan Das Gupta. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the statement showing further action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 5th report of the Committee on External Affairs on the replies to the observations, recommendations contained in its first report on the demand for grants of the Ministry of External Affairs for the year 2019-20. Thank you. Reports of the Committee on Welfare of Other Backward Classes, Srimati Geeta Reyes Chandraprabha. मंत्री जी, उनका होने के बाद। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आज की कार्य सूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों एवं कल्याण संबंधी समिति का 9वां, 10वां और 11वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती हूँ। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित वक्तव्य
सदन के सभापटल पर रखता हूं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों 2019-2020 के संबंध में विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समितियों के कार्यान्वयन की स्थिति। नंबर 2, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों 2020-21 के संबंध में विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समितियों के कार्यान्वयन की स्थिति। धन्यवाद। श्री हरदीप सिंह पुरी। Sir, with your permission, This is I rise to make a totally statement unacceptable. regarding status of implementation of recommendations, observations contained in the third report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants 2019-20 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, I lay the statement. They were noting his presence and praising his presence. Why are you bothered? महोदय, श्री पगन सिंह कुरस्ते। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूँ। श्री नित्यानंद राय। पति महोदय, आपकी अनुमति से निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। दिल्ली में बिगड़ती हुई यातायात की स्थिति के प्रबंध पर 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय अस्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति। श्री अजय कुमार। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों 2020-21 के संबंध में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 224वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति। Announcement by the chair to inform members that the Business Advisory Committee in its meeting